हाय एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो। एंड आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रेज्यूमे राइटिंग। रेज्यूमे राइटिंग इज़ वेरी एसेंशियल फॉर एनी रोल यू अप्लाइंग टू। या तो आप 12th में हो और अगर आपको कॉलेज के लिए अप्लाई करना है, या फिर कोई भी एक जॉब हो, अगर आपको एक सिक्योरिटी गार्ड से लेके इफ़ यू आर अप्लाइंग फॉर एन आईएएस ऑफिसर रैंक और फॉर एन मल्टीनेशनल कंपनीज, सो रेज्यूमे प्लेज एन वाइटल रोल। ठीक है, नाउ हाउ रेज्यूमे इज़ डिफरेंट फ्रॉम सीवीज। कि सीवी जो होती है वो एक डिटेल्ड फाइल होती है अबाउट अ पर्सन, एंड रेज्यूमे इज कॉम्प्रिहेंसिव समराइज वे। ठीक है, विद इन 2 और 1 पेज, दैट इज द लिमिटेशन फॉर रेज्यूमे। ठीक है, तो आज हम रेज्यूमे के डूज एंड डोंट्स, व्हाट इज द लैंग्वेज शुड फॉलो, व्हाट आर द रूल्स which we should take care of, also seeing different formats for an average student resume template to an advanced professional resume template, वो भी हम देख रहे होंगे। And at the end I'll be sharing with you one hard resume template that has been recently launched, and they shared this on their homepage or the website. So I'll be sharing that file also with you guys. So stay tuned and let's start the video. So as I said, we are going to see resume writing. Okay, I'll be providing the link for the template that is from Harvard, and it is the latest one, so you can just copy paste your details and duplicate it from the website, and then you can use it for your personal use. Okay, first of all we'll be sharing do's and don'ts, and after that I'll be showing all these three templates इस पे हम discuss कर रहे होंगे. So let's start with the do's and don'ts. That means you should not be using so much of general information that is not of relevant. ठीक है, if you are going for an specific role, अगर आपको एक डॉक्टर के रोल के लिए अप्लाई करना है, या सपोज यू आर join some institution, तो you should focus on the role you are applying to. For example, if you are applying as an engineer, so you should list all your skills that are related to engineering, and in skills in the sense all the courses you have, all the certifications you have, all the basic school informations or basic education that you have incurred, that is something you should post on. Okay, also you should keep the basic details such as contact infos, emails, phone numbers, and the achievements, leadership roles, position, etc., whichever is possible. Okay, we should try to be formal, try to be direct. ठीक है, that is like putting your thoughts with confidence, not just relying on some different using some beautiful English words, but it that would not bring you some senses. ठीक है, so try to put your way of speaking to be direct or active speech. This thought is very important because most of the time when we write resumes, so we see different forms of things which we are not currently acquired of. For example, if you are writing some skills, suppose you are beginning with content writing and you wrote that I have achieved this and this, I have 10 plus certifications and that, which is a basically a lie. So do not write something which you don't have. Okay, don't show off to impress the person, the uh, employer. ठीक है, always put your real skills and the real stuff which you acquire, and if you don't, you should try to learn them first, because building skill set is the very important, and presentation is something which shows the attitude which you want to join the organization to. ठीक है, so always make sure to present whatever the real facts are. ठीक है, don't mishap or don't window dress it, because if you get selected also, after a few times the employee will come to know that you have just written the wrong information, and that is not relevant to what skill sets you have. So at the end of the day you'll be out, so that doesn't make sense. You already ate up a job that would be for someone else who really had those skills. Okay, so always be real. The writing language which you are using in your resume writing should be as simple as that. If someone analyzes it for 10 or 15 seconds, he or she would be ready to understand the skill set you have, the education background you're coming from, the class of education you got,
the ranks which you hold, the certifications you have, the skills which you have acquired. If there are some losses, why are those? Okay, so always try to uh, keep your things clean and precise to as basic as you can present. Mistakes which people generally make while doing resumes are, first of all, is the spelling and grammar errors. So always make sure that you are presenting the perfect grammatically free, and all those spelling errors are not there in your resume, because it gives, or it lets a negative impact on the interviewer. Also, missing email and phone information, as I said, ki always put your contact details. Okay? Or nowadays, if you are providing your LinkedIn ID, that is more of relevant, because LinkedIn is an professional platform for nowadays, where an employer can easily verify your all documents, and your presence is very essential at that point of time. So LinkedIn plays a vital role. So with your phone number and email, you can also put down your LinkedIn ID. That brings an credentiality to your resume. Okay? The one of the top mistakes which people do is not demonstrating results. Okay? So that is very wrong, because if you're not listing your skill sets, or if you're not providing the accurate details to your achievements, so they won't make sense, because the person who wants to analyze you is not getting the accurate information which he was supposed to know. Okay? So that would basically not make sense. Okay? Now moving forward with don'ts. Okay? Now we have done resume language we should use, top 5 mistakes which you should not be using. The next top mistakes which you would not be using. Now moving with don'ts and do's of resume. See there. So first don't would be using personal pronouns, for example I and we. So you should avoid it. You should not be writing I, doing this and that. Okay, you just be direct. You should be an as I said, you should be using active speech of saying the drawing numbers in the sense, because numbers provides the accuracy, and the ratio is clearly analyzable when you use numbers. Okay? Next would be use of a narrative style. So in resume, when you are writing a resume style, you should never be giving a story, or you should never presenting like an accident. Okay? Always present to the factual data, the exact fact you have. Like you got 88 point some percentage, so you write 88 point some. You don't write key due to this and that. I was unable to and all. So always be direct. Don't use narrative, don't use slangs. ठीक है? Don't use abbreviatives. ठीक है? Using short forms and all. ठीक है? Do not use pictures. I've seen many stylish people just pretend to be more stylish, and they use the more technical forms of resume. ठीक है? And they put so many of icons, shapes, and pictures that are really irritating. ठीक है? So you should never use a picture, and also never include information like age or gender, and some informations which you don't want to list up. Okay? That is basically not of any relevant to the employer, so you should avoid putting them. Okay? Uh, Also remember, reference are also to be avoided. Okay? References should never be part of your resume, because it has nothing to take, or nothing to uh, guide the employer something about what you are writing. Okay? If you are putting some certifications, you can just put down the link, or the credential link, or the ID which you get, okay, in front of that, and that would be of more relevant. But listing out all your references on another sheet is uh, something you should avoid. Okay? And one more important thing is starting off every sentence with a date is something which is generally seen in the resume, that people are starting every fact with a date listed. So avoid putting dates in starting of every sentence. Okay? Dates are important, but not for each and every information. So give your details accordingly. Okay? Next is now let's talk about do's, what you should do. Okay? So using a consistent and formative style. Okay? That is very important while you are writing a resume. Okay? You should use an
the way you speak, ठीक है, the way you write your words should be consistent, and there should not be any uh, misspellings or something like that is misspelled, or you are not writing up to the mark, ठीक है, after a certain point if you're not having such skills. So you should basically ignore those heads, ठीक है, it's not always important. For example, if you are in college students, so you generally don't have the experience, ठीक है, so it's not important you to write the experience head, you can just avoid it, ठीक है, for your benefit. So always be consistent and use a same format, ठीक है. Next is making it easy to read and follow, balancing white spaces. So white space and everything comes under the maintenance and the overall formatting of the resume. So always take care of the formattings and never uh, go out of that borderline which the format allows, ठीक है. Always make sure that you are writing the words easy to understand, and it should show the fact which you are trying to present it, ठीक है. Next two is using consistent spacing, underlining, italics, bold, and capitalization for emphasis, ठीक है. Next would be listing headings such as experience in order of importance, and that is not of relevant, ठीक है. If you are a working person, so experience is something you can list. If you are a person who is doing many of workshops or events, and he's a session in charge or mentor, so there he can or she can put the listings as experience. But if you are in college students or a school student, so how will you put your experiences? So something which you don't have, try to ignore it, as simple as that, ठीक है. So now let's move forward with the sample templates जो कि मैंने बताए थे. And under this we have three different samples जिसके अंदर है हमें very recent college grad sample, ठीक है. Next we have junior level sample, and the third which we got is mid level professional sample, ठीक है. We'll be seeing one by one. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव इज रिसेंट कॉलेज सैम्पल. तो इसके अंदर अगर कोई कॉलेज ग्रेजुएट है तो वो अपनी क्या डाल सकता है. सबसे पहले बेसिक डिटेल्स, ठीक है. ऑल दिस बेसिक डिटेल्स आई हियर, ठीक है. नेक्स्ट वी हैव एजुकेशन, देन वी हैव एक्सपीरियंस. अंडर एक्सपीरियंस वी कैन शो दैट यू हैव वर्कड फॉर सम वेबसाइट और समथिंग लाइक विच यू वांट शो इफ यू आर एन फ्रीलांसर, ठीक है. तो आप अपनी वो स्किल्स लिस्ट करो अगर उस ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है तो, ठीक है. सो under experience you can put all those things, ठीक है. And then you have skills, एंड देन यू हैव एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़. सो स्किल के अंदर आप अगर आपने कंप्यूटर एप्लीकेशन सीख रखे हैं तो आप उसको लिस्ट करो. अगर आपको क्रिएटिविटी आती है वो लिस्ट करो. अगर आपको एडिटिंग आती है, गेमिंग आती है, समथिंग दैट इज रेलिवेंट टू द जॉब यू अप्लाइंग, सो यू शुड फोकस ऑन राइटिंग दोज थिंग्स, ठीक है. Next, if you see junior level samples, ठीक है, under that we have the samples like we have this basic samples, ठीक है, जो basic details थे, same as that. Next, we have work and internship experience, ठीक है. Now, if you are part of some internship, for example, if I'm part of some internship at Tribe India, yeah, something like if I've worked on Microsoft, so I'll list out the role I was in, then followed by the company and the time period, ठीक है, and all of the roles which I did, ठीक है. So all those things you can list in as comprehensive form as possible, ठीक है. तो आपको ये शो करना है कि आपका रोल क्या था, आप कहाँ पे लिस्टेड थे, आपकी टाइमिंग्स क्या थी, और आपने क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो हैं वो परफॉर्म करी, वो सब आपके अंदर इंटर्नशिप एक्सपीरियंस के अंदर लिस्ट कर सकते हो, ठीक है. नेक्स्ट वी हैव एजुकेशन, एज सिंपल एज दैट. आपने ग्रेजुएशन करा एंड यू हैव शोन योर स्कूलिंग. तो स्कूलिंग अबाउट आप अब सिर्फ 12th दिखा दो, ठीक है, 12th एंड ग्रेजुएशन. इफ़ यू आर इन समवन हु इज़ डूइंग अप्लाइंग फॉर कॉलेजेस, सो यू कैन गो फॉर लाइक 11 10th 12th कि आप अपनी वो रिजल्ट शो कर सकते हो, ठीक है. Next, we have activities and organizations. If you have led some clubs or committees, or you have performed some kind of leadership roles, तो आप वो चीज़ यहाँ पे लिस्ट कर सकते हो, ठीक है. अगर आपने ये सब करा है तो आपका स्किल सेट होगा, ये आप उसको लिस्ट डाउन कर दो, एंड दैट वुड बी एज गुड एज फाइन, ठीक है. Next, we have mid-level professional sample. That means if you are some person who is in mid zone, ठीक है, अगर आपने जस्ट ग्रेजुएशन करी और 2 साल की अपने एक्सपीरियंस ली और उसके बाद आप रेज्यूमे अपना बना रहे हो तो कैसे बनाओगे, दैट इज मोर अलाइन टू दैट थिंग, ठीक है. मैं सब क्लीन कर देता हूँ, थोड़ा मैस लग रहा है.
ठीक है। सो अंडर दैट द बेसिक डिटेल्स आर सेम, ठीक है। आप नेम लिखो, अपना एड्रेस लिखो इफ़ यू वांट, देन योर फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी एंड द लिंक्डइन प्रोफाइल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। एड्रेस इज़ समथिंग व्हिच यू कैन अवॉइड फॉर नाउ, ठीक है, बिकॉज़ दैट इज़ नॉट something that to be asked in latest, that is ATS friendly softwares, ठीक है, they analyze it, and that is not much of that relevant to the person who is seeing your applicant form. So that's why we need to avoid it for now, ठीक है। Then you can write your professional summary, like what are the roles you have led till now, what are the ideas which you wish worked on, or projects you have handled, or you are part of some kind of team. So that is something you should write, ठीक है। Then you have professional experience, again the company, the roles you have, the timing you were part of, and all those ideas which you worked on or projects I worked on, ठीक है। So all one by one you can list, ठीक है। It is not important कि अगर आप सिर्फ एक कंपनी लिस्ट करो, how many companies you have worked on, you write all those parts, ठीक है। Next, we have education. Under education, we write the if you've done graduation, if you've done masters, or if you've done schooling. So for schooling, you can just write 12th. Then you can write the graduation. You can write the masters. ठीक है? Certifications and organizational studies which you have done, you can write it at that certain point, ठीक है। There you can list all the other courses also if you are done, ठीक है। So this is something जो कि सब पे लागू हो जाएगा। अगर आपने कोई कोर्स करा है तो आप उसको स्किल सेट में डाल सकते हो, ठीक है। आप प्रोजेक्ट्स में डाल सकते हो, अगर आपने कोई कॉम्पिटिशन जीता है आप उसको ऐड कर सकते हो। सो दैट इज समथिंग यू शुड ट्राई फॉलोइंग ऑन, ठीक है। नाउ आई विल शो यू द लेटेस्ट हाउ format that is being shared on the website. So just give me 1 second. So this is the latest format which is listed on the website, ठीक है। आप लिंक देख सकते हो। I'll share this link in the description also, ठीक है। I'm not someone who will ask you to go to some Telegram channel or some website to buy it or something like जो कि चीज़ें ड्राइव पे आराम से मिल सकती हैं, ठीक है। दिस इज़ समथिंग व्हिच आई डोंट ओन, सो आई कांट सेल इट ऑफ कोर्स। सो आई विल डायरेक्टली पिन दिस इन द, ठीक है, इन द डिस्क्रिप्शन। एंड ऑल्सो लेट्स सी व्हाट दिस सैम्पल सेज, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम, देन वी हैव होम और street address, ठीक है, if you want to share, ठीक है। City and state is something you should say, ठीक है, that is of much relevant, ठीक है। Next we have your college or how ID, phone number, then under education you can give the university name, then schoolings, their details, ठीक है, that you can share, the year, the location and everything, ठीक है। Next we have experience. On the experience you can write if some internships you have done, you can write the organization, position title, and the city or state which it belongs to, and the year, ठीक है। So this is something that you should focus on, and all the skills जो कि आपने सीखी है या functions आपने जो भी रिपोर्ट में काम करा है, तो आप उसको यहाँ पे लिस्ट कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट इट्स फॉलोड बाय लीडरशिप एक्टिविटीज। तो समथिंग यू शुड फोकस इज कि जो जो हेड्स है ना, ये सेम होने चाहिए, ठीक है। आपको ये ही फॉर्मेट फॉलो करना चाहिए विदाउट गोइंग फॉर सम फोटोग्राफ्स और समथिंग, ठीक है। आप अपनी ही स्टाइल बना रहे हो, दैट आपको बिल्कुल नहीं करना है, बिकॉज एटी सॉफ्टवेयर विल जस्ट रिजेक्ट इट। तो ऑलवेज फॉलो द सिंपल टेक्स्ट फॉर्मेट स्टाइल, ठीक है। आप लीडरशिप एक्टिविटीज़ में अपने ऑर्गेनाइजेशन रोल और क्या आपने एक्टिविटी से प्रोजेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एज एन टेक्निकल हेड इन माई यूनिवर्सिटी आई लेड अबाउट 40 to 45 इवेंट्स, ठीक है। तो उस तरह की आपने स्किल्स लिखनी है, आपने क्या सीखा, आपने क्या चीज़ें हैंडल करी, क्या मैनेज करा, वो सब लिखना है। स्किल्स एंड इंटरेस्ट इफ़ यू हैव, ठीक है, यू कैन लिस्ट इट आउट इन डिफरेंट फॉर्मेट्स, ठीक है, इफ़ यू हैव वन, ठीक है। इफ़ यू वांट वी कैन टॉक ऑन दिस अ लिटिल बिट मोर शेयरिंग आर रेज्यूमेस, ठीक है, मैं अपना शेयर करूँगा। इफ़ यू आर बीइंग पार्ट ऑफ, यू कैन ऑल्सो शेयर योर रेज्यूमेस, ठीक है। एंड देन वी कैन डिस्कस ऑन इट कि व्हाट आर द थिंग्स वी शुड चेंजिंग एंड व्हाट आर द थिंग्स वी शुड वर्किंग ऑन, ठीक है। सो दैट इज़ हाउ यू बिल्ड योर रेज्यूमे, दैट इज़ हाउ यू बिल्ड योर स्किल सेट फॉर योरसेल्फ, ठीक है। आप चीज़ें लिखते हो, यू फाइंड इट कि ये चीज़ें नहीं है मेरे पास, यू वर्क ऑन इट, यू बिल्ड इट एंड देन यू राइट इट। सो दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर पर्सनल डेवलपमेंट, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। दिस वीडियो इज ऑलरेडी वेरी मच लॉन्ग, ठीक है। आई होप यू हैव लर्न समथिंग, आई होप यू विल यूज दिस फॉर्मेट एंड मेक योर रेज्यूमे टू। अगर आप बना लेते हो, इफ सो बी फ्री टू शेयर, ठीक है, कि भैया आई हैव डन दिस एंड थैंक यू सो मच एंड ऑल, ठीक है।
तो उस तरह अगर आपको कोई प्रॉब्लम भी आती है, आप उसको शेयर करो, वी विल फिक्स इट एज़ सून एज़ पॉसिबल, ठीक है? जनरली आई रिप्लाई टू ऑल द कमेंट्स आई गेट फॉर नाउ, ठीक है? तो यू कैन जस्ट लिस्ट योर प्रॉब्लम एंड आई सॉल्व एज़ सून एज़ आई कैन गेट प्रॉब्लम, ठीक है? इफ यू आर फेसिंग इश्यूज़ तो हम साथ में बैठ के भी काम कर सकते हैं, ठीक है? आई विल बी प्लानिंग सम लाइव एंड आई पुट दैट ऑन पोस्ट, ठीक है? अगर आई गेट द गुड रिस्पॉन्सेज़ सो विल डू एंड डेफिनिटली अ लाइव जहाँ पे हम लाइव रेज़्यूमेज़ बना रहे होंगे, ठीक है? सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड हैव अ गुड डे।